Hello everyone, welcome to ElevateClasses. I am Dibyajyoti Sir, and in this video we are going to do some problems related to special theory of relativity from previous year's questions that have come in Physics IITJAM. तो STR से related आज हम कुछ problems करने जा रहे हैं और जो topic है they are related to Lorentz Transformations, length contractions and time dilation. STR में बहुत सारे topics है. Let's suppose velocity transformations, energy momentum etc. Velocity transformations, energy momentum के लिए मैं एक separate सा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज हम सिर्फ Lorentz transformation, length contraction और time dilation से related कुछ problems हैं. Total I have 7 problems today to discuss. उनको detail में discuss करते हैं. Let me explain to you those questions one by one because these are questions now which are not very difficult but also not very easy. इसलिए having a proper understanding of not only the subject of STR but also how to use the different formula in the right context is very important. But before I start with the questions, let me give you a brief idea about the formulas involved. The main formula is associated with the Lorentz Transformations. Lorentz Transformations क्या है? हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, लेट्स सपोज हम इसको बोलते हैं एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देयर इज एन ऑब्जर्वर, और इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एक और ऑब्जर्वर है जिसको हम बोलते हैं एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जो एस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. ही इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ v along the x डैश एक्सिस. और अगर दोनों ऑब्जर्वर किसी भी फिजिकल इवेंट को स्टडी करते हैं और उसके बाद उनके कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करते हैं, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स x, y, z, t. So these are basically the coordinates of a physical event as measured by an observer in the S frame, and the coordinates x dash, y dash, z dash, t dash. So these are essentially the coordinates of a physical event as measured by an observer in S dash frame. इनके बीच का जो relationship है that is given by what is known as the Lorentz Transformations. And the Lorentz Transformations are very simple. They have this particular form. X dash is equal to gamma x minus vt. Y dash is equal to y, z dash is equal to z, and t dash is equal to gamma t minus vx upon c square. यहाँ पर gamma is nothing but 1 upon root over 1 minus v square upon c square. This set of equations is only relevant for those cases जहाँ पे relative velocity is along the x dash axis. Because of these Lorentz transformations, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के लेंथ को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सपोज इन द एस डैश फ्रेम देयर इज एन ऑब्जेक्ट एंड इट हैज अ पर्टिकुलर लेंथ एंड दिस लेंथ इज del L naught. So del L naught is the proper length. तो what is the length of that rod according to an observer in the S frame जिसके रेस्पेक्ट में वो रॉड मोशन पे है, वहां पे we come up with what is known as length contraction. तो अगर there is a length of del L naught, an object or a ruler of length del L naught, and its length is being measured by another observer in S frame जिसके रेस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट मोशन पे है, then the length measured by an observer in the S frame with respect to which that rod or that scale or that object is in motion along the x-axis is given by del L naught root over 1 minus v square upon c square. This is the very common formula of length contraction. Now there is also length contraction along a particular inclined direction. That means अगर ये जो rod है या ये जो scale है वो relative velocity के डायरेक्शन में ना हो करके किसी पर्टिकुलर इंक्लाइन डायरेक्शन में है, लेट्स सपोज relative velocity किस डायरेक्शन में है, relative velocity इस डायरेक्शन में है, राइट, बट rod is in a inclined direction. Let's suppose if rod is in an inclined direction and the inclination is, let's suppose we can say at an angle theta with this particular rod, in that case the length contraction simply comes out to be del L is equal to del L naught root over 1 minus v square cos square theta
अपॉन सी स्क्वायर. इसको थीटा नॉट भी कहते हैं या आप थीटा भी लिख सकते हो. इट्स अप टू यू. दिस इज बेसिकली द एंगल दैट द रॉड मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ relative motion. And another important factor is, let's suppose if both of these persons have two clocks with them, then what is the rate at which both the clocks tick? That is given by what is known as the famous formula of time dilation. So time dilation में अगर जो S dash फ्रेम में है उसका एक पर्टिकुलर क्लॉक है एंड दैट क्लॉक रिकॉर्ड्स अ टाइम ऑफ व्हाट इज नोन एज डेल्टा, जिसको हम प्रॉपर टाइम बोलते हैं, then that same time interval according to an observer in S frame with respect to which S dash is in motion is given by delta upon root over 1 minus v square upon c square. यहाँ पे the length that is measured with respect to an observer in the rest frame of the object or the clock or the rod, that is known as proper length, and the time measured by an observer in the rest frame of that particular watch is known as proper time. ठीक है. सो दिस इज प्रॉपर लेंथ एंड प्रॉपर टाइम. ये जो कुछ एक्सप्रेशंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं. इनफैक्ट याद करना ज़रूरी है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट हैव कम इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. तो इसको यूज़ करके वी आर गोइंग टू डू सम प्रॉब्लम्स टुडे. सो लेट मी बोरो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट हैज़ कम इन फिजिक्स IIT JAM. सबसे पहले मेरे पास जो सवाल है दैट इज़ this particular question from Physics IIT JAM 2009. Let me read the question. A space crew has a life support system that can only last for 1000 hours. What minimum speed would be required for safe travel of the crew between two space stations separated by a distance of 1.08 into 10 to the power 12 kilometers? सवाल बहुत ही सिंपल है. A space crew, let's suppose there is a space crew which is traveling in some kind of a, some sort of a spacecraft, all right, and it is going from one station to another station. So let's suppose it is going from this station to some other distant station, all right. So it has to cover this particular distance, right. इतना distance इसको cover करना पड़ेगा. Okay. A space crew has a life support system that can only last 1000 hours. What minimum speed would be required for safe travel of the crew between two space stations separated by a fixed distance of 1.08 into 10 to the power 12 kilometers? That means the distance between the space crew and the space station is 1.08 into 10 to the power 12 kilometers. Now the question is, हमें time find out करना है. नो इनफैक्ट हमें टाइम दिया हुआ है कि 1000 आवर्स तक उनके पास लाइफ सपोर्ट सिस्टम है और इसी टाइम पे द स्पेस क्रू शुड रीच द स्पेस स्टेशन. बट दिस इज द टाइम विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द स्पेस शिप. सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर दिस इज ट्रू. लेकिन ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है दिस इज अ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू द लैब फ्रेम या फिर विथ रेस्पेक्ट टू द स्पेस स्टेशन. सो व्हाट कैन वी डू हियर? हियर व्हाट वी कैन डू इज अकॉर्डिंग to the spaceship, okay, what is the time jisme they should reach the space station? That is 1000 hours. Yes, 1000 hours is equal to how much? 1 hour is how much? 1 hour is 3600 seconds. All right, so this is equal to 3.6 into 1 2 3 4 5 6 10 to the power 6 seconds. All right. Now, according to the spaceship, what is the distance that it has to cover? According to spaceship, the distance that it has to cover is not 1.08 into 10 to the power 12 kilometers. 1.08 into 10 to the power 12 kilometers is the distance according to somebody in the lab frame or somebody on the space station, right? बट क्योंकि स्पेसशिप इज इन मोशन तो उसके लिए ये जो डिस्टेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, राइट. द डिस्टेंस दैट यू मेजर डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव वेलोसिटी विद विच यू आर ट्रैवलिंग.
So if the spaceship is traveling with some sort of a velocity, so the distance that they measure ends up getting contracted. So this contracted distance is equal to del L naught root over 1 minus v square upon c square. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो del L naught is equal to 1.08 into 10 to the power 12 kilometers, तो 10 to the power 3 into 10 to the power 3 meters हो गया. फिर root over, if I substitute, let's suppose 1 minus v square upon c square. v क्या है हमें नहीं मालूम, v ही हमें फाइंड करना है, but this is essentially the distance. तो स्पेसशिप के लिए ये डिस्टेंस हो गया. उनके पास इतना टाइम है जितने टाइम में उनको पहुंचना है. तो व्हाट इज द स्पीड विथ विच दे शुड ट्रेवल? सो द स्पीड with which the spaceship should travel is equal to the distance that it has to complete in their own reference frame upon the time that they have left for the support system to finish. So this is equal to 1.08 into 10 to the power 15 and root over 1 minus v square upon c square upon the time, which is 3.6 into 10 to the power 6 seconds. So यहाँ पे what we can do is we can simplify it. What is the speed? Speed is nothing but v. So v is equal to, we can kind of simplify what we are dealing with here, right? So this is nothing but 1.08 divided by 3.6. So let me try what that is. So 1.08 divided by 3.6 is nothing but 0.3. All right. So this becomes 0.3 को हम 3 लिख देते हैं. 0.3 into 10 to the power 15 minus 6 is 10 to the power 9. So we can write this as 3 into 10 to the power 8. तो ये तो speed of light ही हो गया ना. So this is nothing but 1 minus v square upon c square. तो ये तो nothing but speed of light हो गया. c हो गया ये, right? ये अगर c हो गया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v upon c is equal to root over 1 minus v square upon c square. तो root over को हटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा square. तो ये कितना हो गया? 1 is equal to v square by c square plus v square by c square is equal to 2v square upon c square. तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा v square is equal to c square upon 2. तो v is equal to c upon root 2. So the answer to our problem is simply v is equal to c upon root 2. तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, the option B, c upon root 2 is the correct answer. c upon root 2 is the correct answer. तो ये जो क्वेश्चन है, it was not very difficult if you understand the concept of length contraction and time dilation. You have to realize that according to the spaceship, ये जो distance है वो contract हो जाता है. ठीक है? या फिर अगर हम किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशंस करें, अगर हम स्पेस स्टेशन में जो ऑब्जर्वर उसके रेस्पेक्ट से अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे तो वहां पे उल्टा हो जाएगा. वहां पे द टाइम ऑफ द person on the spaceship will get dilated. All right. So you can either use time dilation or length contraction depending upon from the perspective of which observer's frame of reference you are doing the calculations. So let us move ahead to the next question that we have. So this question came in Physics IITJAM 2012. मैं एक बार इसको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर we'll do it. Light takes 4 hours to cover the distance from Sun to Neptune, right? If you travel in a spaceship at 0.99 the speed of light, the time in minutes that is required to cover the same distance measured with a clock on the spaceship, ये important है, with a clock on the spaceship, मतलब according to a clock on the spaceship, वो टाइम कितना होगा for a spaceship to go from the sun to Neptune. All right. So अगर हमारे पास यहाँ पे let's suppose we have the sun, right? We have the sun here. And then we have Neptune, which is a planet here. All right. So what is the distance between the sun and the Neptune? Okay. The distance between the sun and the Neptune is nothing but the time it takes for light to complete this journey, which is 4 hours.
4 hours का मतलब है 4 into 3600 seconds multiplied by the speed of light 3 into 10 to the power 8. Okay, meters. This is the distance, right? The distance is the time it takes for light to complete this journey multiplied by the speed of light. That is the distance. Now the question is how much time it would take for a spaceship to complete this distance if the spaceship is going. तो हमारे पास एक स्पेसशिप है, okay, and the spaceship is traveling with a velocity of v. Okay, क्वेश्चन में दिया हुआ है v is equal to 0.99 c. So what is the time required to cover the same distance measured with the clock on the spaceship? So accordingly we have to look at the time taken with respect to some sort of a observer in the spaceship itself. So the velocity is 0.99 c. तो इस spaceship के लिए ये distance कितना होगा? For a moving spaceship, the distance appeared contracted. So what is this contracted distance? The contracted distance between the Sun and Neptune according to the moving spaceship is simply given by the length contraction formula, that is del L naught root over 1 minus v square upon c square, where v is already given in the question to us. V is equal to 0.99 c. In fact, we can calculate what this contracted distance is. Let's suppose this is nothing but del L. So del L is equal to del L naught, or rather we should say del L naught is nothing but यहाँ पे जो मैंने अभी just now obtain करा था, the length which is given to be the distance between Sun and Neptune according to the Sun itself, let's suppose, is 4 into 3600 into 3 into 10 to the power 8 and root over we have 1 minus v square upon c square, जिसको हम लिख सकते हैं क्योंकि v is equal to 0.99 c, तो c square कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमें बचेगा this particular expression. तो इसको सिंप्लीफाई करने से पहले let us look at the question. क्वेश्चन में पूछा क्या है? What is the time taken by the clock on the spaceship in which it goes from Sun to the Neptune? All right. तो उसके लिए हम सिंपल स्पीड वाला फॉर्मूला लगाते हैं. According to the spaceship, speed of the spaceship v is simply equal to the distance covered according to the spaceship and the time taken. Everything must be according to spaceship, okay? This is according to spaceship and the time taken is also according to spaceship. Special relativity में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, we have to be very very careful that when we do calculations we must always maintain consistency of those measurements from the perspective of a certain observer. हम अलग अलग observers के measurements को mix नहीं कर सकते randomly, ठीक है? We have to make sure कि जिस observer के respective से हम calculations कर रहे हैं उसी observer के perspective से जो measurements हैं उसी को use करें, ठीक है? So if this is v and the distance is given by 4 into 3600 into 3 into 10 to the power 8 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रूट ओवर 1 माइनस 0.99 स्क्वायर. इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व करके रखा था. इफ़ यू सॉल्व दिस सिंपली कम्स आउट टू बी रूट ओवर 0.99 स्क्वायर becomes 0.98 and this becomes 0.02 and the speed is already the time is already given to you. What is the time? No, the time is not given to us, the speed is given to us. तो एक काम करते हैं हम, let me bring the time here and speed here, okay? So the speed is given to us 0.99 c. All right, so 0.99 c I can write here as 0.99 into 3 into 10 to the power 8. So यहाँ पे 3 into 10 to the power 8 और ये cancel हो जाएगा और जो हमारे पास बचा है, the time required is nothing but this. So I can simplify this into 4 into 3600 and square root of 0.02 is nothing but 0.1414 divided by 0.99. Now I have actually solved this. All right.
So if we do the calculations and we simplify this particular expression, the time that we get is in seconds. If I want to get, because the question says what is the time in minutes, so if I want to get it in minutes, I'll have to divide it by 60. Then I'll get it in minutes, and this comes out to be around 34.3 minutes approximately. Okay, approximately it comes out to be 34.3 or something like that. So approximately the answer is option number A. So A is the answer. So as you can see, this was a very simple question involving nothing but length contraction with respect to the spaceship, and if we do it with respect to the sun or somebody on the Neptune, then it would involve time dilation. Let's move ahead to the next question. So the next question has also come in Physics IITJAM previous years. Now this is a very interesting question because it has to do with what is known as a very famous experiment known as muon decay. So muon decay is one of those very historically famous experiments because that proved the validity of the experimental or rather you can say that gave an experimental validity to the idea of time dilation. ठीक है, उसी से related ये question है. Let us do it. Muons are elementary particles produced in the upper atmosphere. They have a lifetime of 2.2 microseconds. Consider muons which are traveling vertically towards the Earth's surface at a speed of 0.998 c. For an observer on Earth, the height of the atmosphere above the surface is 10.4 kilometers. Which of the following is are true? ये MSQ question है, that means multiple options are correct here. First option, the muons can never reach the Earth's surface. Second option, the apparent thickness of Earth's atmosphere in muons frame of reference is 0.96 kilometer. Third option, the lifetime of muon in Earth's frame of reference is 34.8 microseconds. Last option, muons traveling at a speed greater than 0.998 c reach the Earth's surface. तो इस प्रॉब्लम में हो क्या रहा है? You have a muon particle that is traveling towards the Earth's surface. ठीक है, और अर्थ का जो एटमोसफियर है इट हैज़ अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, बट म्यूऑन का जो लाइफ टाइम है वो भी बहुत कम है. तो द क्वेश्चन इज द लाइफ टाइम ऑफ द म्यूऑन सफिशिएंट इनफ फॉर इट टू रीच द अर्थ्स सरफेस? एंड इसमें स्पेशल रिलेटिविटी कैसे आता है? इसमें स्पेशल रिलेटिविटी इसलिए आता है बिकॉज यहाँ पे जो लाइफ टाइम दिया हुआ है, द लाइफ टाइम ऑफ द म्यूऑन इज एक्चुअली द प्रॉपर लाइफ टाइम ऑफ द म्यूऑन. प्रॉपर लाइफ टाइम का मतलब क्या है? प्रॉपर लाइफ टाइम का मतलब है दिस इज द लाइफ टाइम ऑफ द म्यूऑन विथ रिस्पेक्ट टू द म्यूऑन इटसेल्फ. 2.2 माइक्रोसेकेंड्स मतलब 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड्स. मतलब अगर म्यूऑन के पास कोई क्लॉक है तो अकॉर्डिंग टू द म्यूऑन द लाइफ स्पैन ऑफ द म्यूऑन इज 2.2 माइक्रोसेकेंड्स. बट अकॉर्डिंग टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ, अगर एक अर्थ में एक ऑब्जर्वर म्यूऑन को देख रहा है तो उस अर्थ ऑब्जर्वर के लिए म्यूऑन का लाइफ टाइम कितना होगा? दैट इज नॉट गोइंग टू बी 2.2. Why? Because of time dilation. So the lifetime according to the muon is 2.2, but the lifetime according to an observer on the earth is not 2.2 microsecond. It will experience time dilation. So according to an earth observer, lifetime of muon is given by the time dilation formula. That means del t is equal to, प्रॉपर टाइम को मैं del tau लिख देता हूँ या del t नॉट, जो भी, del tau is upon रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. del tau कितना है? 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड्स, एंड दिस इज नथिंग बट 1 माइनस वी इज 0.998 स्क्वायर. इसको मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है. 0.998 स्क्वायर को अगर 1 से सब्ट्रैक्ट करें और उसका स्क्वायर रूट लें तो वी शुड गेट समथिंग लाइक 0.063. यू कैन वेरीफाई दिस विद अ कैलकुलेटर इफ यू हैव, एंड दिस इज 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड्स या फिर 2.2 माइक्रोसेकेंड्स. तो अल्टीमेटली दिस कम्स आउट टू बी 34.8 माइक्रोसेकेंड्स या 34.8 इंटू 10 टू माइनस 6 सेकेंड्स. दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इजंट इट? बिकॉज म्यूऑन का जो लाइफ स्पैन है इट इज 2.2 माइक्रोसेकेंड्स अकॉर्डिंग टू द म्यूऑन हिमसेल्फ,
or according to a clock in the muon's frame of reference. लेकिन according to somebody in the earth frame of reference, उसी same muon का लाइफ स्पैन हो जाता है 34.8 माइक्रोसेकेंड्स बिकॉज ऑफ टाइम डायलेशन. So if we look at the various options, option number C कहता है lifetime of muon in Earth's frame of reference 34.8 microseconds. So this option is correct. But as I said, this is an MSQ. तो MSQ है तो बाकी options भी correct हो सकते हैं. तो बाकी options को भी check करते हैं. Let's look at option number B, the apparent thickness of Earth's atmosphere in muon's frame of reference. तो muon के frame of reference में Earth की जो atmosphere है, उसका जो height है, it will experience contraction. Yes, according to somebody on the ground, the length of the atmosphere is, height of the atmosphere is given by as 10.4 kilometers, right? So this is 10.4 into 10 to the power 3 meters. लेकिन according to the moving muon, ये muon जो है velocity v के साथ travel कर रहा है, वही distance contract हो जाएगा, है ना? So according to the muon, contracted length या contracted height of atmosphere is equal to del L naught root over 1 minus v square upon c square. ठीक है. So del L naught कितना दिया हुआ था? It was given as 10.4 into 10 to the power 3 meters, and this is nothing but 1 minus 0.998 square. इसको अगर हम solve करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10.4 into 10 to the power 3 into इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो 0.063 आना चाहिए. सो अल्टीमेटली दिस शुड कम आउट टू बी समवेयर अराउंड 0.65 किलोमीटर्स. इफ यू हैव अ कैलकुलेटर जस्ट चेक इट, राइट. सो बट ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है? अपैरेंट थिकनेस ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर इन म्यूअर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस 0.96 किलोमीटर. अब हमें मिला है 0.65 किलोमीटर. तो दैट मीन्स दिस इज इन इनकरेक्ट ऑप्शन. ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है. और फाइनली the muons can never reach the earth's surface. ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि can the muons which survive for 34.8 microsecond according to the earth observer and travel at 0.998 speed the times the speed of light can reach this earth's surface that is at a distance of 10.4 kilometers. तो ये बहुत ही simple है, right? So we have the muons lifetime of 34.8 microseconds. And the velocity with muons is traveling at 0.998 the speed of light. So can it travel a distance? So distance traveled by the muon, distance traveled by muon according to an earth observer, okay? According to an earth observer, the distance traveled by muon is nothing but, what is it? It is the speed multiplied by time, which is 0.998 into the speed of light is 3 into 10 to the power 8 meters per second into 34.8 into 10 to the power minus 6 seconds. So अगर हम इसको multiply करेंगे तो this should come out to be somewhere around 10.4 kilometers exactly. I mean, if you have a calculator, please check. This multiplication should give you something like 10.4 kilometers. So therefore, क्योंकि एटमोसफियर का हाइट 10.4 किलोमीटर्स है एंड अ म्यून दैट सर्वाइव्स फॉर दिस लॉन्ग आल्सो ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10.4 किलोमीटर्स, देयरफॉर दिस इज वेरी मच करेक्ट that the muons can, sorry, this is incorrect, okay, this is incorrect because it says it can never reach the Earth's atmosphere, so this is incorrect. The last option says muons traveling at speed greater than 0.998 reach the Earth's atmosphere. अगर greater speed में जाएगा तो एक तो डिस्टेंस कम हो जाएगा और टाइम ज़्यादा डायलेट हो जाएगा, तो ईजिली इट विल रीच द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. सो द करेक्ट आंसर्स आर ऑप्शन नंबर सी एंड डी. करेक्ट आंसर्स आर ऑप्शन नंबर सी एंड डी. आगे बढ़ते हैं. लेट मी ब्रिंग अनदर क्वेश्चन फ्रॉम स्पेशल रिलेटिविटी दैट हैज़ कम इन प्रीवियस ईयर्स पेपर्स. म्यून का क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कर लिया, सो दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन. So next question is related to length contraction, but for an inclined direction, okay, which is also a very easy but interesting question, okay, and it has come in previous years papers, so we need to take it seriously. So the question goes as follows. मैं एक बार पढ़ देता हूँ, then I'll show you the solution. A rod is moving with a speed of 0.8 c in the direction at 60 degrees to its own length. The percentage contraction of the length of the rod is what? So let's suppose आपके पास एक rod है, right? There is a rod
and this rod is moving with a speed of 0.8 c. So V is equal to 0.8 c in a direction 60 degrees. In a direction 60 degrees to its own length. उसके length के 60 degrees के respect में वो travel कर रहा है, right? The percentage contraction कितना होगा? तो उसके लिए formula is very straightforward. Just remember this formula, okay? इसका derivation भी बहुत मुश्किल नहीं है, derivation बहुत simple है. X axis में कितना length है उसका contraction देखो, Y axis में length contract नहीं होता है, तो effective length is nothing but del x square plus del y square. तो उस expression को हम simplify करके finally we can come up with the length contraction along an inclined length, which is del L is equal to del L naught root over 1 minus V square by C square cos square theta. Cos square theta या cos square theta not बोलते, this is effectively the angle 60 degrees which it makes with the relative velocity direction. तो यहाँ पे theta कितना है? Theta 60 degrees है. V कितना है? V 0.8 c है. तो अगर हम इसको substitute करेंगे तो क्या आएगा? That's it. IIT जैम का क्वेश्चन है लेकिन इतना सिंपल है, देखो. So this is 1 minus 0.8 cc will get cancelled. We'll have 0.64. Cos 60 degrees half, square है तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा. So this is del L naught root over, this is nothing but 1 minus 0.16. तो यहाँ पे आ जाएगा del L naught root over 0.84 आ जाएगा, and root over 0.84 is nothing but if you calculate it 0.92. Okay, so percentage contraction कितना हुआ फिर? Percentage contraction is very easy to calculate. Percentage contraction is original length minus the contracted length, which is 0.92 del L naught upon del L naught into 100%. That's it. That's the percentage contraction. So del L naught upon del L naught यहाँ पे आ गया, and here you have 1 minus 0.92, right, into 100%. Okay, so 0.92 कितना है? 0.08 है. ये तो हो गया कैंसिल, तो इंटू 0.08 को अगर आप 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे, comes out to be 8%. So the answer is 8% contraction for this rod moving at a direction 60 degrees to its length. How simple this question was, right? Very simple. So let's move ahead to the next question. अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं. ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन I can guarantee that many students are going to make mistakes because they would not know what to do. Well, ऐसे सवालों में सिर्फ Lorentz Transformations को अप्लाई करना है, that's all. ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ. Two events E1 and E2 take place in an inertial frame S with respective time space coordinates. E1 का time space coordinate है T1 is equal to 0 and x1, y1, z1 is equal to 0. E2 का coordinates है T2 is equal to 0, x2 is equal to 10 to the power 8 and y2 is equal to 0, z is equal to 0. Another inertial frame S dash is moving with respect to S with a velocity of 0.8 c I cap, मतलब x axis में. The time period difference T2 dash minus T1 dash is what? इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है. जस्ट यूज द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस. ओके, जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने आपको बताया था बस उसको यूज करना है. ठीक है, तो व्हाट इज T2 डैश? T2 डैश इज नथिंग बट गामा T2 माइनस V x2 अपॉन C स्क्वायर. यही तो है. दैट्स अ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इवेंट E2. सो T2 इज द टाइम with respect to some frame S, x2 is the distance with respect to some frame S, and T2 dash is the time with respect to some frame S dash which is moving with a velocity V along the x-axis. ठीक है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो गामा, इसको जस्ट मैं यहाँ पे अभी गामा लिख देता हूँ for the time being. So T2 क्या है? T2 is already given to you here. T2 is nothing but 0 and V कितना है? V is 0.8 c upon यहाँ पे आ गया c square, and what is x2? x2 is already given to you as 10 to the power 8. So into 10 to the power 8. So this is equal to how much? This is gamma को लिख देते हैं root over 1 minus v square. V square is 0.8 into 0.8 becomes 0.64. C gets cancelled, and here you have minus 0.8 upon c into 10 to the power 8. Right? यहाँ पे जो है c will get cancelled and this becomes 1 upon root over 0.64 क्या है? root over 0.36. root over 0.36 क्या है? 0.6. तो ये बन गया आपका 0.6. ये बन गया आपका माइनस 0.8 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और यहाँ पे आ जाएगा 10 टू द पावर 8
तो हो गया 3 and 10 to power 8 कैंसिल, यहाँ पे आपका आ जाएगा, इफ़ यू कैंसिल इट आउट, हियर यू विल गेट 3 and here you will get 4. So this is equal to minus 4 by 3 into 3, 9. So 4 by 9 कितना होता है? minus 0.44 seconds. Now हमें T1 डैश भी तो कैलकुलेट करना है. T1 डैश कैलकुलेट करने के लिए सिंपली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन सिमिलर फैशन में लगा देंगे. T1 माइनस Vx1 अपॉन सी स्क्वायर. तो T1 क्या है? T1 दिया हुआ है 0 है, तो गामा 0 लिख दिया. X1 क्या है? X1 भी दिया हुआ है कि R1 0 है, मतलब X1, Y1, Z1 सारे 0 हैं. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 0 ही तो हो गया. दिस इज नथिंग बट 0. So essentially now finally we get the answer, which is very very simple in fact. T2 dash minus T1 dash is equal to minus 0.44 seconds. That's it. कितना सिंपल था, 3-4 स्टेप्स में हो गया. This is a question that came very recently in IITJAM 2018. This is the answer and you can easily achieve this just by using the Lorentz transformation. कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. Just rely upon the mathematical foundation of relativity, which are the Lorentz transformations, and you will get the answer. All right. So let us move ahead to the next question. हमारे पास अभी सिर्फ I think 2 ही questions बचे हैं, and if you have understood all the questions that I have discussed in today's video, then you are ready for these kind of questions that may come in various exams. Questions related to length contraction, questions related to time dilation, questions related to Lorentz transformations. And there are a large number of questions that come in various competitive examinations, and these questions are very easy. You can easily do it, so you should never leave this particular topic. 3 events, E1, E2 and E3 occur as observed in an inertial frame S. Frame S dash is moving with speed v along the positive x direction with respect to S. In S dash, let T1 dash, T2 dash and T3 dash be the respective times at which E1, E2 and E3 occur. Then, how are T1 dash, T2 dash and T3 dash related? Exactly same problem अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है कि नहीं? We did exactly the same problem just moments back. क्या करना होता है यहाँ पे? Just apply the Lorentz transformations. Apply the Lorentz transformations, look at the transformation with respect to all the events with respect to S and S dash. That's it, and then you can make a comparison. Okay, तो E1 के लिए हम यहाँ पे ये 1 कर देते हैं, CT1 X1, E2 के लिए हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, and E3 के लिए यहाँ पे CT3 and X3 कर देते हैं. ठीक है, डायरेक्टली मैं Lorentz transformations लिख दूंगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. अगर Lorentz transformations को हम लिखें तो T1 dash क्या है? T1 dash is nothing but gamma T1 माइनस Vx1 अपॉन सी स्क्वायर. तो यहाँ पे T1 क्या है? T1 इज 0, तो ये 0 माइनस Vx1 क्या है? Vx1 इज 0, तो ये V अपॉन सी स्क्वायर इंटू 0 हुआ, तो ये 0 हो गया. यस, लेट्स लुक एट T2 डैश. T2 डैश इज गामा T2 माइनस Vx2 अपॉन सी स्क्वायर. सो गामा T2 क्या है? T2 इज ऑल्सो 0. ठीक है, V अपॉन सी स्क्वायर. X2 क्या है? X2 इज L. ओके, X2 L है, तो यहाँ पे हम L लिख देते हैं. सो व्हाट इज दिस? माइनस गामा VL अपॉन सी स्क्वायर. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट T3 डैश. T3 डैश गामा T3 माइनस Vx3 अपॉन सी स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू गामा T3 क्या है? T3 इज ऑल्सो 0 एंड आई हैव V अपॉन सी स्क्वायर. X3 क्या है? X3 इज माइनस L, तो माइनस L तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू गामा VL अपॉन सी स्क्वायर. अब बताओ कि विच इज लार्ज, विच इज स्मॉल. सो ऑफ कोर्स T3 डैश इज ग्रेटर कंपेयर्ड टू T1 डैश कंपेयर्ड टू T2 डैश. दैट्स इट. दिस इज योर आंसर. ऑप्शन नंबर A, T3 dash greater than T1 dash greater than T2 dash. That is your answer. How simple it was. Whenever you are comparing different physical events and their coordinates with respect to 2 different observers S and S dash, just apply the Lorentz transformations and they are more than sufficient. So let us move ahead to the last question of the day. ये सारे questions अगर आपने कर लिए हैं तो you are ready for any kind of a question on length contraction, time dilation or Lorentz transformation. So last question of the day, let's do this. ये जो क्वेश्चन है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है. इट केम इन अ वेरी रीसेंट एग्जामिनेशन IITJAM 2022.
but it is such an easy question. I mean, if you miss this kind of a question in the examination, you would really regret it. इस तरह के सवाल को कभी मिस नहीं करना चाहिए because it's a very easy question. A rod with a proper length of 3 meters moves along the x-axis, making an angle 30 degrees with respect to the x-axis. If its speed is c by 2, where c is the speed of light in vacuum, the change in length due to Lorentz transformation, or sorry, Lorentz contraction is how much? ये नैट क्वेश्चन है, मतलब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको हमें आंसर निकालना पड़ेगा. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था, है कि नहीं? हमारे पास एक रॉड है, राइट, मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, ऑलराइट, बट द रॉड इज इंक्लाइंड at an angle of 30 degrees, right, with the x-axis. तो उसकी velocity क्या है? Velocity दी हुई है is c by 2. इसका proper length क्या है? Del L naught is given as 3 meter. तो just formula लगा दो. Del L is equal to del L naught root over 1 minus v square upon c square cos square theta or theta naught. Okay, essentially this is the angle the axis makes with the direction of relative motion. तो this is 3 meter, this is root over meter को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा यूनिट्स है. 1 minus v is c square upon 4 and then you have c square gets cancelled. cos 30 कितना होता है? root 3 by 2. स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 upon 4. तो essentially क्या हुआ? 3 root over 1 minus 3 upon 16. तो ये कितना होगा? 3 root 13 upon 4. तो हमें क्या पूछा गया है? चेंज इन लेंथ. सो चेंज इन लेंथ इज del L naught minus del L. Change in length they have asked us. So this is equal to del L naught minus del L. So this is equal to del L naught is how much? 3 minus 3 root 13 upon 4. So 3 root 13 upon 4 को मैंने कैलकुलेट किया हुआ है. इफ़ यू हैव अ कैलकुलेटर यू कैन कंपेयर. दिस शुड कम आउट टू बी 2.704. इतना आना चाहिए, ठीक है. एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट इट यू शुड गेट 0.296 meters. दिस शुड बी द आंसर. दैट्स इट. कितना सिंपल है. सो यू कैन सी फ्रॉम द 7 questions that we did today, the questions of STR that have come in Physics IITJAM in the previous years, and especially those related to length contraction, time dilation and Lorentz transformations are very simple. बहुत ही simple है and इनको miss बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है. But थोड़ा सा practice की ज़रूरत है because STR is a little bit of a different subject and इसमें problems को solve करने के लिए you need to be in the right mindset. By right mindset I mean that you need to be very careful about the observer. किस observer के perspective से हम calculations को कर रहे हैं. हम अलग अलग observers के measurements को combine नहीं कर सकते. अगर हम किसी एक ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसी ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से हमें मेजरमेंट्स को यूज़ करना पड़ेगा. वी हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू whom we are doing the calculations. And if you maintain these simple steps, then you should be able to do and solve these problems very easily. तो आज के लिए इतना ही. My name is Dibyajyoti Sir and this is ElevateClasses. I will see you in the next lecture जहाँ पे I will talk about problems in STR but comparatively for different topics like velocity transformations, mass, momentum, energy relationship, etc. तब के लिए thank you so much. I will see you next time. Bye bye.